साथियों का स्वागत है। Well, my friends, we are right now discussing. In the last session, we discussed about all concepts about NPA. और इस सेशन में हम पहले चर्चा करेंगे विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में, लार्ज डिफॉल्टर्स के बारे में। आइए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा मेरे साथियों। आइए, ध्यान दीजिएगा, विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में बात करेंगे। 2 मिनट का टाइम दूंगा। ये रहा जुलाई 2024 की लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है। 2-3 बातें लिखिए। बिफोर आई गो ahead, please write down couple of things. As per this master circular, as per this master circular, as per this master circular, consent of non-cooperative borrower, concept of non-cooperative borrower discontinued. Concept of non-cooperative borrower discontinued. Secondly, consent of large defaulter, concept of large defaulter introduced. Large defaulter introduced. आइए मेरे साथ। What is a willful default? ध्यान देंगे, मेरे साथ रहेंगे मेरे साथ। क्योंकि कोर्स में बड़े सीनियर साथी भी बैठे हैं, तो एक लाइन कह के मैं नहीं समाप्त कर सकता that a person defaults when he has capacity to repay. ना, थोड़ा हमको डिटेल बात करनी पड़ेगी। What's a willful default? और ऑफिसर्स के केस में हम जा नहीं सकते ऐसा, इवन स्केल 1 में भी सारा पढ़ाना पड़ेगा। When there is a default in repayment, even when the borrower has capacity to pay, even when the borrower has capacity to pay, तो भी डिफॉल्ट करे तो विलफुल डिफॉल्ट है। डाइवर्शन ऑफ फंड्स, मैं बताऊंगा आपको क्या है डाइवर्शन ऑफ फंड्स, साइफरिंग ऑफ फंड्स, डाइवर्शन ऑफ फंड्स, साइफरिंग ऑफ फंड्स, मैं बताऊंगा दोनों आपको क्या है। डिस्पोजल ऑफ immovable or movable assets, disposal of immovable or movable assets given to the bank as security, जो बैंक को सिक्योरिटी के रूप में रखे गए थे, गिवन टू बैंक एज सिक्योरिटी। आजकल कोई बैंक को ये तो है नहीं कि संभला के जा रहा है, पड़े तो उन्हीं के पास रहते हैं। एंड फिफ्थली व्हाट इज विलफुल? फेल्योर टू ब्रिंग equity, failure to bring equity which was committed at the time of sanction of the loan, which was committed at the time of sanction of the loan, which was committed at the time of sanction of the loan. भैया नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा। डाइवर्शन ऑफ फंड्स मीन्स, डाइवर्शन ऑफ फंड मीन्स, यहां नहीं दिया है, मैं लिखवा। डाइवर्शन ऑफ फंड मीन्स loan is utilized within the firm, but for some other purpose, then the one for which it was sanctioned.
Siphoning of funds funds taken out of the business and used somewhere else. शेयर खरीद लें, कमर्शियल रियल एस्टेट खरीद लें, पैसा फर्म से निकाला और लैंड में लगा दिया और लैंड के भाव बाद में घट गए तो नुकसान हो गया। आइए रिपोर्टिंग ऑफ विलफुल डिफॉल्ट is done to all the credit information companies of which bank is a member, जिस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का बैंक मेंबर है उन सबको रिपोर्ट करेगा। ये भी देख लीजिएगा जरा से यहां पे। एट प्रेजेंट credit information companies are कौन सी है? At present credit information companies are number one CIBIL, CRIF Highmark, Equifax and Experian। 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, चारों को उसने रिपोर्टिंग करनी। कट ऑफ पॉइंट फॉर रिपोर्टिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 25 lakh and above, periodicity of reporting monthly है, ब्रैकेट में एक बात लिख देंगे, रिसेंटली जुलाई के बाद की बातें हैं ये। रिसेंटली RBI wants to make it fortnight की नहीं है भाई, अभी कर देगा। RBI ने अपनी इंटेंशन जाहिर की है कि रिपोर्टिंग हम फोर्टनाइटली करेंगे, ये रिपोर्टिंग हम फोर्टनाइटली करेंगे। आइए आज मंथली है मेरे साथ। टाइप ऑफ अकाउंट्स टू बी रिपोर्टेड, कौन कौन से खाते रिपोर्ट होंगे? नंबर ए willful defaulters with suit filed accounts, ऐसे willful defaulter जिनके खिलाफ सूट फाइल किया गया है। willful defaulters which are known suit filed accounts, दो अलग अलग स्टेटमेंट जाएंगे मेरे साथियों। नेक्स्ट बात, ये नया डेवलपमेंट आया है, ये वाला पॉइंट नया आया है, ध्यान दीजिएगा, नया पॉइंट है मेरे साथियों। मैं लिखवाऊंगा, थोड़ा पॉइंट लंबा है। when name of a willful defaulter is removed from the list, then bank will नहीं, दोबारा लिखिए, मैं दोबारा इस पॉइंट को मैं दोबारा लिखूं। when outstanding balance in willful defaulter account
falls below 25 lakh, falls below 25 lakh, falls below 25 lakh, bank shall advise CIC, Credit Information Company, bank shall advise CIC within 30 days, to remove the name from list of willful defaulters, to remove the name from list of willful defaulters. Next one. Identification of willful defaulter. Identification of willful defaulters will be done by a committee headed by ED, will be done by a committee headed by ED, will be done by a committee headed by ED, and two senior officials, not more than 2 ranks below the ED, not more than 2 ranks below the ED, not more than 2 ranks below the ED. जिस बैंक में सीजीएम है तो जनरल मैनेजर तक बढ़ेंगे, जिस बैंक में सीजीएम नहीं है तो डीजीएम तक बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट. Borrower will be given 21 days notice. Borrower will be given 21 days notice. नई बातें आई हैं दोस्तों. Borrower will be given 21 days notice. Borrower can make representation to review committee. Borrower can make representations to review committee within 15 days. Within 15 days of proposal from identification committee. Within 15 days of proposal from identification committee. और ये रिव्यू कमेटी क्या है, लिखिए दोस्तों. रिव्यू कमेटी इज हेडेड बाय एमडी. रिव्यू कमेटी इज हेडेड बाय एमडी and members will be two independent directors or non-executive directors Next part. If bank observes willful default, बैंक को पता लगता है कुछ willful default चल रहा है. Bank will declare borrower as willful defaulter. Within 6 months of classifying the account as NPA. Within 6 months of classifying the account as NPA. जब भी खाता एनपीए बनेगा आपको देखना है कि विलफुल डिफॉल्टर है कि नहीं है. अगर विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं इसका फैसला 6 महीने में कर लेना है. नेक्स्ट बात. ध्यान. एक्शन अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स. Number 8. Bank will make non-discriminatory policy, uniform policy for publishing the photographs. कि उनके फोटोग्राफ छपवाने कि नहीं छपवाने हैं. For publishing the photograph of willful defaulters. No additional facility
to the company, or any other entity, with which willful defaulter is associated. With which willful defaulter is associated. For how much time? लिखिए, additional facility will not be given. Additional facility will not be given for 1 year. For 1 year. For 1 year. Of removal of the name. From list of willful defaulters. जिस दिन उनका नाम willful defaulters हटेगा, उसके 1 साल तक उनको कोई बैंक एडिशनल फैसिलिटी नहीं देगा. एक और बात है दोस्त, ध्यान दीजिए. नो क्रेडिट फैसिलिटी टू एनी न्यू प्रोजेक्ट set up by willful defaulter, for 5 years, after removal of the name from list of willful defaulters. ये सारी बातें थी मेरे साथी willful defaulter के बारे में. अब large defaulter means ये जरूरी नहीं कि willful defaulter होगा ना. Large defaulter means a defaulter with outstanding of 1 crore and above. A defaulter with outstanding of 1 crore and above. And where account has been classified as doubtful or loss. Where account has been classified as doubtful or loss, or a suit has been filed, large defaulters will be reported to CIC monthly. Done. If there is a compromise settlement with willful defaulter, his name will be removed from the list. If he has fully paid compromise amount. If he has fully paid compromise amount, or outstanding is less than 25 lakh. Next बात दोस्तों. Names of the guarantors will also be reported. Names of the guarantor and directors will also be reported. ये मेरे साथियों थे सारी willful defaulter और large defaulter के बारे में. एक बात और, CRILC, data reported to CRILC, Central Repository of Information on large credits. Central Repository of Information on large credits
सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन और लार्ज क्रेडिट्स, वो क्या क्या रिपोर्ट होगा? नंबर 8, borrowers with aggregate exposure of 5 crore and above. Borrowers with aggregate exposure of 5 crore and above. Number 2, SMA accounts with outstanding of 5 crore and above. पहले नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर भी रिपोर्ट हुआ करते थे, वो तो कंसेप्ट खत्म कर दी। SMA accounts with outstanding of 5 crore and above. A red flagged accounts. Red flagged accounts. Where there is a suspicion of fraud. Where there is a suspicion of fraud. Based on early warning signals. Based on early warning signals. And current accounts with balance of 1 crore and above. Current account with balance of 1 crore and above. 1 crore and above. ध्यान दीजिएगा भाई, इसकी डेफिनेशन बदल गई है, लिखिएगा। कट ऑफ पॉइंट फॉर रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स। कट ऑफ पॉइंट फॉर रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स in July 2024 circular is cut-off point for red flagged accounts as per July 2024 is outstanding of 3 crore and above. Outstanding of 3 crore. फ्रॉड का सस्पिशन भी है और आउटस्टैंडिंग 3 करोड़ से ज्यादा है, तो रिपोर्ट होगा मेरे साथ। आइए अब बात करेंगे रिकवरी ऑफ एडवांसेस की। रिकवरी के बारे में बात करेंगे मेरे साथियों। अच्छा, ये सवाल खूब हिट है। व्हाट इज दैट मेथड ऑफ रिकवरी इन विच नो कोर्ट टू DRT इज रिक्वायर्ड? लिख लो, खूब आया हुआ है। अर्लियर लिमिट 50 करोड़ थी भाई, अर्लियर लिमिट 50 करोड़ थी। मेथड ऑफ रिकवरी फॉर विच नो कोर्ट टू DRT इज रिक्वायर्ड। कंप्रोमाइज, sale of NPA to ARC, sale of NPA to ARC, या रिस्ट्रक्चरिंग कर लें, या रिस्ट्रक्चरिंग कर लें, और यू मे डू रिस्ट्रक्चरिंग। ये भी एक रिकवरी का मेथड है। आइए बस ध्यान दीजिएगा। RBI का सर्कुलर 2023 का कंप्रोमाइज सेटलमेंट पे और टेक्निकल राइट ऑफ पे, लिखिए दोस्तों। कंप्रोमाइज सेटलमेंट मीन्स, compromise settlement means negotiated arrangement with the borrower. Negotiated arrangement with the borrower to fully settle the claim in cash. To fully settle the claim in cash. कैश मनी वो कुछ भी और भी चेक वगैरह भी दे दे तो चलेगा। If there is a part settlement, if there is a part settlement, it will be considered as restructuring. It will be considered restructuring. नेक्स्ट, टेक्निकल राइट ऑफ का मतलब क्या है? किताबों में खाता खड़ा रहेगा, सिर्फ आप अपनी बैलेंस शीट में से एडवांस को हटा देंगे। टेक्निकल राइट ऑफ मीन्स NPA remain outstanding, NPA remain outstanding at borrower's loan account,
at borrower's loan account. But written off for accounting purposes. But written off for accounting purposes. Written account for compromise purposes. ध्यान दीजिए, लिखिए, ध्यान देंगे मेरे साथ में। कंप्रोमाइज सेटलमेंट की बातें चल रही है। In compromises, any official who has sanctioned the loan, will not be part of compromise settlement. जिसने खुद ही वो लोन सैंक्शन किया था उसका वो कंप्रोमाइज एडवोकेट नहीं करेगा। नेक्स्ट पार्ट, if payment time exceeds 3 months, it will be treated as restructuring. ध्यान दीजिए, छोड़िए इसको, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए। कूलिंग पीरियड, minimum cooling period is 12 months. 12 आज कंप्रोमाइज किया तो 12 महीने तक उसको फ्रेश एडवांस नहीं करेंगे। बट दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू फार्म क्रेडिट। नेक्स्ट पार्ट, if compromise is done in a fraud account, then criminal proceedings will continue. May continue. नेक्स्ट बात दोस्तों, ये बातें थी मेरी विलफुल डिफॉल्ट के बताई, लार्ज डिफॉल्ट के बताई, कंप्रोमाइज की बताई, इसके टेक्निकल राइट ऑफ की बताई। अब आइए एक बात करेंगे एआरसी के बारे में, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। उनको भी हम अपने एंड पे बेचते हैं। आजकल कई बैंकों ने खरीदना बंद कर दिया उनसे। आइए, objective of ARC is to take over NPAs from banks. Next बात दोस्तों, ARC should be registered with RBI. And net owned funds should be 15% of acquired assets. 15% of acquired assets. Minimum net owned funds of ARC 300 crore. Minimum net owned funds of ARC 300 crore. And minimum capital adequacy ratio of ARC. Minimum capital adequacy ratio of ARC 15%. ये सवाल कर लीजिएगा भाई, लास्ट ईयर आया है। ARC अपना पैसा नहीं लगाना चाहती, वो उस लोन के एवज में सिक्योरिटी जारी करेगी।
लेकिन बीच का टाइम तो है। ARC should subscribe to ARC should subscribe to at least 15% of security, at least 15% of security receipts issued by ARC. ये जो लोन को सिक्योरिटाइजेशन कर देते हैं, सिक्योरिटी बदल देते हैं, उसका नेक्स्ट वो करेंगे साथ। रिस्ट्रक्चरिंग, दूसरा केस है रिस्ट्रक्चरिंग का। थोड़ा लंबा चैप्टर दोस्तों, बहुत ज्यादा कवरेज किए। रिस्ट्रक्चरिंग, मॉडिफिकेशन, एक साथी ने पूछा था रिस्ट्रक्चरिंग क्या है। मॉडिफिकेशन है टर्म्स ऑफ द लोन्स, टर्म्स ऑफ द लोन्स, alteration in repayment period, alteration in repayment period, rollover of credit facilities, rollover of credit facility, एनपी से बचने के लिए रोल ओवर कर दें, रोल ओवर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, sanction of additional facility, sanction of additional facility, and compromise settlements, compromise settlements. If time for payment exceeds 3 months, time for payment exceeds 3 months, 3 महीने तक था तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग नहीं मानेंगे। ये बात हम लिख चुके। आइए दोस्तों, ये आरबीआई का सर्कुलर आज भी जिंदा है, 2019 का। प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, ध्यान दीजिए। A report will be sent to CRILC. मैं पहला पॉइंट लिखवा रहा हूं। A report will be sent to CRILC on every Friday, on every Friday of the week, on every Friday of the week, about default by borrowers, default by borrowers with aggregate exposure of 50 million and above, with the aggregate exposure of 50 million and above. ये तो हो गई रिपोर्टिंग। अब बैंक क्या करेंगे, बैंक बोरोवर के अकाउंट का रिव्यू करेंगे। लिखिए दोस्तों, इफ लोन गिवन बाय मोर देन वन बैंक, if loan given by more than one bank, then banks will review borrower account within 30 days of the default. Within 30 days of the default. इसे हम कहते हैं रिव्यू पीरियड, इसे हम कहते हैं रिव्यू पीरियड। आइए, अगर रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट करनी है, अगर रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट करनी है तो 75% of lenders by value and 60% by number एग्रीमेंट करेंगे। लिखो, in case of restructuring, in case of restructuring, decision by 75%,
decision by 75% lenders by value and 60% by number, and 60% by number agree, it will be binding on all lenders. It will be binding on all lenders. और 25% पे भी लागू रहेगा. नेक्स्ट बात, रिव्यू पीरियड इज ऑफ 30 days. रिव्यू पीरियड इज ऑफ 30 days. रिव्यू पीरियड हमने दे रखा है यहां पे. रिव्यू पीरियड ऑफ 30 days. ध्यान दीजिए. नेक्स्ट बात, resolution plan will be implemented. Resolution plan will be implemented within 180 days from end of the review period, from end of the review period of 30 days. From end of the review period of 30 days. Next बात में साथ ध्यान दीजिएगा. Implementation conditions for resolution plan. Implementation conditions for resolution plan. भाई चैप्टर थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान रखना. Implementation conditions for resolution plan. For accounts with aggregate exposure of, for accounts with aggregate exposure of 1 billion rupees, 1 billion है 100 crores, with aggregate exposure of 1 billion rupees, independent credit evaluation will be done by credit rating agencies. एक से करा लेंगे. And if exposure is 500 crore and above, if exposure is 500 crore and above, तो दो रेटिंग करानी हो. 2 ratings will have to be done. 2 ratings will have to be done. A resolution plan to be implemented. Resolution plan to be implemented. If credit opinion is RP4 or better. His credit opinion is RP4 or better. सिर्फ वही इंप्लीमेंट होंगी दोस्तों, बाकी नहीं. नेक्स्ट ऊपर, RP4 का मतलब होता है मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी. RP4 का मतलब है मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी. अब थोड़ा सा एडिशनल प्रोविजन की बात कर लेंगे मेरे साथियों. थोड़ी सी एडिशनल प्रोविजन की बात कर लेंगे. ध्यान दीजिए. If there is a delay in implementation of the resolution plan, if there is a delay in implementation of resolution plan, then additional provision is to be done. Additional provision will have to be done. ध्यान दीजिएगा. If it is not implemented within 180 days of the review period, रिव्यू पीरियड था 30 दिन का, याद होगा आपको, ध्यान.
if RP is not implemented within 180 days from end of the review period, then 20% of the outstanding, 20% of the outstanding will be additional provision. 20% of the outstanding will be additional provision. And if it is not implemented, within 365 days, from commencement of the review period, जिस दिन पहली बार विचार हुआ था कि भाई ने डिफॉल्ट कर दिया, रिव्यू करो, फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द रिव्यू पीरियड, then in addition to 20%, further 15% provision will have to be made. Further 15% provision has to be made. 30 plus 15, 45%. 20 plus 15, 35%. ये मेरे साथ थी रिस्ट्रक्चरिंग की बात। एक और बात है मेरे साथ, ये बात तो हमारी हो चुकी। तीसरा एक काम है मेरे साथी लोक अदालत का। लोक अदालत रिकवरी का एक तरीका है। हमने रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर ली, हमने कंप्रोमाइज की बात कर ली, अब लोक अदालत की बात कर ली। एस्टेब्लिश्ड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, established under Legal Services Authority Act 1987. These are compromise courts. Informal courts. Documents and witnesses not required. Documents and witnesses not required. Documents and witnesses not required. Documents and witnesses are not required. जानकारी मेरे साथ है। Documents and witnesses not required. Maximum amount of claim that can be referred to Lok Adalat. Maximum amount of claim that can be referred to Lok Adalat, 20 lakhs. ये मेरे साथी ने एक सवाल पूछा भाई मेरे से, ध्यान दीजिए कि साहब ये 75% बाई वैल्यू एंड 60% बाई नंबर, ये एंड है वर्ड, और नहीं है, एंड है, दोनों शर्तें होनी चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लेम रेफर टू लोक अदालत is 20 lakhs. But if Lok Adalat is arranged by, DRT, then claims of higher amount can be filed. Court fees nil है मेरे साथियों, court fees is nil. And banks prefer Lok Adalat because court fees is nil. Banks prefer Lok Adalat because no court fees. अब इन्होंने अगर फैसला म्यूचुअल कंसेंट से कर सकते हैं तो लिख डिसीजन ऑफ लोक अदालत with mutual consent of bank and borrower.
with mutual consent of bank and borrower. With mutual consent of bank and borrower. और अगली बात लिखी, since decision is with mutual consent, since a decision is with mutual consent, no appeal against decision of लोक अदालत, no appeal against decision of लोक अदालत in any court, किसी कोर्ट में आप नहीं कर सकते। एक बात और दोस्तों, है तो ये इनफॉर्मल कोर्ट्स, लेकिन एक बार फैसला हो गया तो इनके नियम वैसे लगेंगे जैसे बाकी के लगते हैं। लिखो दोस्तों, दो लोक अदालत आर नॉट फॉर्मल कोर्ट्स, दो लोक अदालत आर नॉट फॉर्मल कोर्ट्स, decrees issued by Lok Adalat have same status. Decrees of the Lok Adalat have same status and binding and are binding and are binding. आइए ये प्योर लीगल मामला आ गया। 1993 में इनकी स्थापना हुई थी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में साथियों, ये कौन से एक्ट के तहत स्थापना हुई है? रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स and Insolvency Act 1993. DRTs are established under Recovery of Debts Due to Banks and Insolvency Act 1993. These are established by central government. These are established by central government. DRT is one-member tribunal. DRT is one-member tribunal. And head of the DRT is presiding officer. Head of the DRT is presiding officer. बड़े सिंपल सवाल है दोस्तों। डीआरटी के प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास एक रिकवरी ऑफिसर होता है और एक रजिस्ट्रार होता है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर इज असिस्टेड बाय रिकवरी ऑफिसर एंड रजिस्ट्रार। रिकवरी ऑफिसर एंड रजिस्ट्रार। कौन से केस डीआरटी में भेजे जाते हैं? जहां रिकवरेबल ड्यूज 20 लाख या उससे ऊपर। Only those cases are filed with DRT. Only those cases are filed with DRT. Where recoverable dues are 20 lakhs and above. Where recoverable dues are 20 lakhs and above. 20 lakhs and above. Done. There is no maximum limit. मिनिमम की लिमिट तो है, पर मैक्सिमम की कोई लिमिट मेरे साथियों नहीं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। Decision within 2 hearings. Decision within 2 hearings. Decision within 2 hearings. ध्यान दीजिए, डीआरटी जो फैसला करे उसके फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी डीआरटी में, और अपील करनी होगी 30 दिन में। लिखो दोस्तों, अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ डीआरटी। अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ डीआरटी
to be done within 30 days, to be done within 30 days from receiving the copy of judgment, and appeal will be made to DRAT. And appeal will be made to DRAT. And appeal will be made to DRAT. Head of the DRAT is called chairperson. Head of the DRAT is called chairperson. Head of the DRT is called chairperson. बोरोर भी अपील फाइल कर सकता, बैंक भी अपील फाइल कर सकता। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान कर ले भाई, 2 मिनट लगेंगे। If borrower wants to appeal, तो जितना डीआरटी साहब ने जजमेंट दिया था उसका 50% डीआरटी के पास जमा कराना होगा। If borrower wants to appeal, then 50% of the judgment amount, 50% of the judgment amount to be deposited with DRAT, and chairperson can reduce it to 25%। आई कोर्ट फीस भी देख ले भाई, आयते तो है नहीं आजकल, तो साथ ही कई बार पूछ लेते हैं। फिर कोर्ट फीस, डीआरटी की कोर्ट फीस मिनिमम 12,000 है, मैक्सिमम 1,50,000, मैक्सिमम 1,50,000। और डीआरएटी की कोर्ट फीस है मिनिमम 12,000, मैक्सिमम 30,000, मिनिमम 12,000, मैक्सिमम 30,000, मैक्सिमम 30,000। भाई ज्यादा सवाल यहां तक होंगे नहीं, और इसको छोड़िए आप। एक छोटी सी बात कर, कई बार रिकवरी ऑफिसर कुछ फैसले करते हैं और उनके फैसले से दूसरी पार्टियां नाराज होती, तो वो किसके पास अपील कर सकती, लिख लीजिए। चाहे रजिस्ट्रार के खिलाफ अपील हो, चाहे रिकवरी ऑफिसर के खिलाफ अपील हो, तो डीआरटी को की जाएगी। लिखो दोस्तों, अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ द रिकवरी ऑफिसर, appeal against any order of the recovery officer to DRT within 30 days of the order, and appeal against order of the registrar, also to DRT within 15 days of the order, इस साथी ने एक सवाल पूछा, भाई सवाल देख लेते हैं जरा एक बार। भाई लोक अदालत और डीआरटी दोनों अलग हैं। लोक अदालत तो इनफॉर्मल कोर्ट्स है, वहां पे कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता। आप लोक अदालत में गए हैं तो जाइए, आपने डीआरटी के पास फाइल कर रखा फिर भी जा सकते लोक अदालत में।
और बड़ी बात बता दूं मैं आपको, आपने डीआरटी में केस फाइल किया, कोर्ट फीस दे दी, बाद में लोक अदालत में चले गए, फैसला हो गया, कोर्ट फीस रिफंड हो जाएगी, आपकी कोर्ट फीस रिफंड हो जाएगी। आई, नेक्स्ट मेरे साथ, सरफेसी के बजाय मैं थोड़ा सा आईबीसी लूंगा। ये जरा आसान है, सरफेसी थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक ले लेते हैं जरा सा। ये मेरे साथ ही कह रहे हैं कुछ बैंकों को अपील करनी है तो कुछ जमा नहीं करवाना। बैंक वांट्स टू अपील नथिंग टू बी डिपॉजिटेड। Who will pass order? Presiding officer and recovery officer both? नहीं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर तो केस का फैसला करता है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर तो केस का फैसला करता है, रजिस्ट्रार आपकी प्लेंटी एडमिट नहीं कर रहा, तो फिर किसको कहेंगे? डीआरटीओ कहेंगे। रिकवरी ऑफिसर आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो किसको कहेंगे? डीआरटीओ को कहेंगे। आई, मेरे पास टाइम है 22:37 का। मैं सरफेसी के बजाय थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड दूं, क्योंकि सरफेसी तो बहुत लोगों को आता है, इसमें थोड़ी कठिनाई रहती है साथियों। आई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, उसका टाइम निकाल देंगे, सरफेसी का कल कर देंगे। आसान सा काम है, बिल्कुल कोई बदलाव भी नहीं। ये टिपिकल है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। धीरे धीरे बढ़ेंगे मेरे साथियों। पर्पज ऑफ द आईबीसी, क्यों लगाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द डेटर इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। हुआ नहीं, ऑब्जेक्टिव लिख की तरह है, हुआ कुछ नहीं ऐसा। जो डेटर्स की असेट्स हैं उनको किसी और को बेचा जाए तो उनका अंदाजा है कि वैल्यू ज्यादा मिलेगी। खाली एसेट्स को बेचते हो स्ट्रेंजर को तो बात नहीं बनती है, मैनेजमेंट पूरी बेच दो तो फिर बात बन जाती है। लिख दो दोस्त, आपको क्या जाता है, लिख दो। मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ द assets of the data, maximizing value of assets of the data. Next part, difference between listen, difference between insolvency and bankruptcy. दो वर्ड है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी इन्वॉल्व्स इन लीगल डिक्लेरेशन, आदमी खुद को बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर देते। आपने अभी सुना होगा, वो क्रेडिट स्विस बैंक ने अपने आप को बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया। बैंक्रप्टी इन्वॉल्व्स इन लीगल डिक्लेरेशन, insolvency refers to inability to pay the debts. Insolvency refers to inability to pay the debts. भाई बात लिख लेना शांत से और याद कर लेना, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना। Bankruptcy involves illegal declaration. Insolvency refers to pay inability to pay the debts. There are 4 pillars of IBC. याद रखना, 4 पिलर आईबीसी के। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल,
नंबर 2, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, बहुत सारी चीजें यहां याद करनी पड़ेंगी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, आईबीसी कोड बहुत बड़ा है, बहुत छोटी छोटी बातें छांटी है। और सच बात यह है कि 3-4 बैंकों की सर्कुलर लेके उनसे छांटी है। मैंने आईबीसी से छांटी भी नहीं, मैंने सर्कुलर से छांटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, जिनके पास फैसले के लिए केस जाएगा। और चौथी बात है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। IBC is applicable on, IBC is applicable on limited companies, LLP, limited liability partnership, partnership firms, and individuals, and individuals. IBC. सवाल जहां से आ सकते, मैंने एक एक पॉइंट उठा रखा है। Adjudicating authority for companies and LLP. Adjudicating authority for companies and LLP is NCLT, National Company Law Tribunal. National Company Law Tribunal. And adjudicating authority for partnership and individual. Adjudicating authority for partnership and individual is DRT, Debt Recovery Tribunal. IRP for companies and LLP. Step by step देखेंगे। Insolvency resolution plan process for companies and LLP. Insolvency resolution process for companies and LLP. Number 1, minimum default should be 1 crore. Minimum default should be 1 crore. पहले 1 लाख हुआ करता था, इसको बढ़ा के 1 करोड़ किया गया। Minimum default should be 1 crore. दूसरी बात, IRP can be initiated by, कौन इनिशिएट कर सकता है यार? भाई साहब जिसने पैसा उधार दिया था वो, या जिसने कुछ सामान दिया या सर्विसेज दी और पैसे इन्होंने दिए नहीं वो, या शेयर होल्डर, या एम्प्लॉइज, या कॉर्पोरेट डायरेक्टर खुद भी कर सकता है। लिखिए दोस्तों, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर like bank, financial institution, NBFC, can be initiated by financial creditor. दूसरा, operational creditor. Operational creditor, जिसने काम किया और इन्होंने पैसे नहीं दिए। तीसरा, डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट डेटर, डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट डेटर और शेयर होल्डर or employees of the defaulting debtor or employees of the defaulting debtor for voluntary insolvency proceedings, for voluntary insolvency proceedings, voluntary insolvency proceedings. आइए ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा कि जो रियल एस्टेट की प्रोजेक्ट हैं
उसमें जो अलॉटी है फ्लैट्स के, उन्हें भी हम फाइनेंशियल क्रेडिटर मानेंगे। लेकिन एप्लीकेशन के लिए जितने टोटल अलॉटी हैं उसका 10% या मिनिमम 100, जो दोनों में से कम, वो एप्लीकेशन लगाएं। लिखो, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स विल इंक्लूड, financial creditors will include allottees of a real estate project, allottees of a real estate project, but application to be filed, by minimum 10% allottees, minimum 10% allottees, or 100 allottees, whichever is less. allotee है ही 60, तो 6 allotee भी अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट बात, एक अगली बात, there are two stages in IRP. There are two independent stages in IRP. पहली स्टेज है रेस्क्यू एंड रिवाइवल, जिसको हम रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। फर्स्ट स्टेज इज रेस्क्यू एंड रिवाइवल, जिसको हम रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। और दूसरी स्टेज है लिक्विडेशन, In the first stage, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स असेस वायबिलिटी, भाई ऑपरेशनल क्रेडिटर का कुछ हिसाब नहीं है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स असेस वायबिलिटी एंड ऑप्शन फॉर रेस्क्यू एंड रिवाइवल, विचार करते हैं आपस में कि भाई इनको कुछ और दे दें तो काम चल सकता है। ऑप्शन फॉर रेस्क्यू एंड रिवाइवल, ध्यान दीजिए। जिस दिन ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके 14 डेज के भीतर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये सुनिश्चित करेगी कि डिफॉल्ट है या नहीं। देखिए दोस्तों, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, भाई थोड़ा सा ज्यादा मैं कवरेज कर रहा हूं दोस्तों। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी will ascertain existence of default within 14 days of application for CIRP, corporate insolvency resolution process. Next one, CIRP should be completed within 180 days. CIRP should be completed within 180 days from date of admission of application. It can be extended by 90 days. 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 ये तो मेरे साथियों है ही है, लेकिन एक रूल नया आया, ये मैं दिखा रहा हूं आपको। मैक्सिमम पीरियड फॉर रेजोल्यूशन प्रोसेस, maximum period for resolution process is 330 days. 330 days is 330 days from date of admission of application. From date of admission of application. आज
कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कौन? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन लोग? ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ऑपरेशन क्रेडिटर नहीं है, नोटिस करिए, ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। नंबर 2, वोटिंग राइट्स। अब 4-5 बैंक हो तो वोटिंग राइट्स will be on the basis of financial debts owed to them. किसी ने 10 करोड़ दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 30 दिया, तो जितना जितना उनका पैसा खड़ा है उसके रेशियो में उनके पास वोटिंग राइट्स होंगे। नेक्स्ट बात में साथी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स within 7 days of constitution of the committee. Within 7 days of constitution of the committee. That's committee of creditors will appoint. Point number 18 ले रहा हूं। Committee of creditors will appoint a resolution professional. बहुत मोटी फीस होती है। A resolution professional by majority vote of 66% by value. By majority vote of 66% or above by value. 66% or above of the voting shares. नेक्स्ट वो करेंगे साथ। अब रेजोल्यूशन हुआ नहीं, रिवाइवल हुआ नहीं, तो भाई अब इसको बेचो किसी को, उसको कहते हैं लिक्विडेशन। सेकेंड स्टेज इज लिक्विडेशन। लिक्विडेशन कब पॉसिबल है? 3-4 सिचुएशन से मेरे साथ लिखिए। लिक्विडेशन विल बी डन इफ 66% majority. 66% majority of creditors committee of creditors decide to liquidate. जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसके 66% वोटिंग राइट्स वाले मेंबर कहें कि भाई कुछ नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, इसको बेचो। दूसरी बात, रेजोल्यूशन प्लान not submitted to NCLT. Resolution plan not submitted to NCLT within prescribed period. NCLT rejects the resolution plan. Submitted to it. और चौथी बात, हमने तो रेजोल्यूशन प्लान कर दी, डेटर उसको कंट्रावेंशन कर रहा है, डेटर वायलेट्स एग्रीड रेजोल्यूशन प्लान। भाई या तो 66% कहें कि इसको लिक्विडेट करो, या रेजोल्यूशन प्लान ही सबमिट ना की जाए वो 180 डेज में, या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अनदर 90 डेज, या एनसीएलटी को प्लान दी, उसने रिजेक्ट कर दी कि सूटेबल ही नहीं है, और रेजोल्यूशन प्लान भी बन गई, सब कुछ हो गया, ये बोरोवर जो है ये वायलेट कर रहा है उसको, तो फिर लिक्विडेशन हो। ध्यान देते जाए भाई, ये क्या कर, जिस दिन लिक्विडेशन ऑर्डर हो जाएगी उस दिन उस कंपनी के खिलाफ जितनी कोर्ट में केस है सब पे स्टे लग जाएगा। लिक्विडेशन ऑन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन, moratorium on all pending legal proceedings.
all pending legal proceedings. Next. Priority of claims. अब माल बिक गया तो पैसा किसको पहला मिलेगा? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन. कॉस्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, जो खर्चे पानी हो रहे पहले तो वो निकालो भाई. 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर के मजे, वो वाले काम है. कॉस्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन. फिर सिक्योर्ड डेट, जिस भी बैंक का सिक्योर्ड लोन है, जिसने सिक्योरिटी ले रखी थी, प्लस वर्कमैन ड्यूज फॉर लास्ट 24, प्लस वर्कमैन ड्यूज फॉर लास्ट 24. और ध्यान रखिए, जिसने सरफेसी लगा के सिक्योरिटी बेच ली थी वो सिक्योर डेट में नहीं रहेगा, उसने तो निकाल लिया. वर्कमैन ड्यूज फॉर लास्ट 24 मंथ्स. तीसरी स्टेज पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्यूज. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्यूज. चौथी स्टेज है वर्कमैन ड्यूज, employee dues, employee dues, and unsecured financial creditors, and unsecured financial creditor. और लास्ट में बेचारा ऑपरेशनल क्रेडिटर. लास्ट में है ऑपरेशनल क्रेडिटर. लास्ट में ऑपरेशन क्रेडिटर. आई मिस. फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन, फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन, consent of majority of directors required. Consent of majority of directors required. और लास्ट, जो ऑर्डर एनसीएलटी देगा उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है और 45 डेज में. अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलटी, अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलटी to Supreme Court, to Supreme Court within 45 days. Within 45 days. 1-2-3 मिनट का काम हो रहा है दोस्तों, बस फिर क्लास ओवर करेंगे. कल की क्लास सुबह जैसे एग्रीमेंट हुआ था 10:30 पर रखेंगे. कल की क्लास 10:30 पर रखेंगे. प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. प्री-पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. और कल प्रायोरिटी सेक्टर पढ़ेंगे. प्रायोरिटी सेक्टर स्टार्ट करेंगे. अंशुल जी कल क्लास स्टार्ट करेंगे. प्री-पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये भाई एमएसएमई के लिए है. लिखे दोस्तों, PPIRP is applicable to MSME, is applicable to MSME for outstanding up to 1 crore, for outstanding up to 1 crore, for outstanding up to 1 crore. In CIRP, फटाफट लिखेंगे जरा सा. In CIRP, creditors initiate, financial creditors initiate, financial creditors initiate insolvency resolution, initiate insolvency process. Insolvency process. Here it is, PPIRP में. In PPIRP, initiation by corporate debtor, या ये खुद इनिशिएट करता है. It covers only corporate and LLP MSME. It covers only corporate and LLP MSME. जो MSME corporate या LLP सिर्फ वो कवरेज होगी. और ध्यान दे लीजिएगा, for initiating PPIRP, for initiating PPIRP, consent of
consent of financial creditor, 66% of financial creditors, 66% of financial creditors by value is required. 66% of financial creditors by value is required. Or last, amount will be rupees 10 lakh, 2 rupees 1 crore, 2 rupees 1 crore. किस साथी का सवाल हो तो भाई मैं अवेलेबल हूं, और नहीं तो क्लास बंद करेंगे। और टुमारो वी विल स्टार्ट क्लास है 10:30। प्रायोरिटी सेक्टर स्टार्ट करेंगे पहले 2 सेशन में, और बाद का एक सेशन तीसरा मैं लूं। आइए भाई, इस साथी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है भाई, थोड़ा टीचर का सम्मान कर देते हैं साथी। उन्होंने कहा सर आईबीसी ने क्लीन बोल्ड कर रखा था अब तक, बट थैंक्स टू यू फॉर योर ग्रेटेस्ट एवर एक्सप्लेनेशन। भाई कठिन चीज को सिंप्लीफाई करने का रोल है मेरे साथी, और ईश्वर की बड़ी कृपा है, इतना लंबा अनुभव है कि उस चीज को पढ़ते तो निकाल लेते हैं मसाले चीज। मेरे एक साथी ने बहुत अच्छी बात लिखी है भाई टीचर के लिए। When I take your class, my wife asks me how sir gets so much energy at this age without getting tired. And what is the secret of your energy? किसी की जिंदगी में एनर्जी का सीक्रेट है। अगर मैं बैंक में होऊंगा तो मेरी एनर्जी का सीक्रेट होगा मेरे कस्टमर्स, और यहां पे मेरी एनर्जी का सीक्रेट है मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे रिजल्ट लाके देते हैं। सच बात यह है, जब तक आप रिजल्ट लाके देते रहेंगे तब तक एनर्जी रहेगी। अब बैंक की परिस्थितियां कई बार इतनी गड़बड़ है तो उसका इलाज किसी के पास है नहीं भाई। स्टूडेंट मेरा मेहनत करे, हम शिद्दत से काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे शिद्दत से काम, चिंता नहीं करनी भाई। लेटेस्ट आरबीआई रिस्ट्रक्चरिंग इफ एनी, भाई मैंने तो सारी गाइडलाइन कंप्लीट की है। डेट भी सर्कुलर दे दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। डेट 2019 का ही है मेरे साथ, रिस्ट्रक्चरिंग का सर्कुलर 2019 का ही है। डेट दे दूं, मैं दे दूं आपको डेट। क्लासेस किस डेट तक है, बैंक स्पेसिफिक। अच्छा चलिए चलिए, अच्छी बात, अच्छी बात, सो नाइस। भाई आप जो बात कह देते हैं, मैं तो आपका मुरीद हूं अपने स्टूडेंट्स का, और बार बार कहता हूं जो कुछ बन पाया अपने स्टूडेंट्स के दम पर बन पाया। आप सवाल पूछते गए, मैं जवाब ढूंढता चला गया। आज एनपीए का जवाब भी ढूंढ लिया था, कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा जो मेरे स्टूडेंट ने सवाल उठाया था। और स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं, वो कोई ना कोई नया पॉइंट लेके आते हैं, और मैं उसको बड़ी वैल्यू करते हुए उसको एक्सेप्ट करता हूँ और जवाब दूंगा। थैंक यू भाई। डीआरटी एंटरटेन ओनली लोन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, नॉट लोन रेट। नहीं नहीं नहीं, डीआरटी आईबीसी में डीआरटी सिर्फ इंडिविजुअल के और पार्टनरशिप के केसेस एंटरटेन करता है। आईबीसी में, डीआरटी एक्ट में वो सारे केस एंटरटेन करता है। ओके डियर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट माय डियर, वी विल मीट टुमारो।